मतलब उतना अच्छा आउटपुट दे पाएगा, एंड ये प्रॉब्लम्स भी आई गेस रूल बेस से ही सॉल्व। तो सेकंड प्रॉब्लम, रैंकिंग द वेब सर्च रिजल्ट्स। तो ये क्या लगता है, ये किस अप्रोच से आपको लगता है कि ये सॉल्व हो सकेंगी, रैंकिंग द वेब सर्च रिजल्ट्स? ओके, और किसी को बताना है? ओके, लेट्स सी क्या इसका आंसर है। सो बोथ, यहाँ पे हम रूल बेस्ड भी एल्गोरिदम यूज कर सकते हैं एंड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम भी यूज कर सकते हैं रैंकिंग द वेब सर्च रिजल्ट्स में। बेसिकली आप मशीन रूल बेस्ड मतलब ये मतलब ये पिछले इसके जैसे होगा कि आपको मतलब अल्फाबेट को एक लाइन से करना था, रैंकिंग वाइज करना था, मतलब ए टू जेड, एंड सेम इसमें भी आपको वेब सर्च के रिजल्ट्स रैंक करने हैं, बेसिकली सॉर्ट करने रिजल्ट्स को। ये रूल बेस्ड के बेस हो सकता है एंड मशीन लर्निंग थ्रू भी हो सकता है। ओके, द नेक्स्ट क्विज, अंडरस्टैंड कुछ प्रॉब्लम है इसमें, ये वाले इसमें क्विज में? If है तो you can ask any questions in chat box also, or you can open your mics. Okay, so this problem ये प्रॉब्लम है एक क्लासिक प्रॉब्लम है मशीन लर्निंग में। मतलब बेसिकली सबकी फर्स्ट प्रॉब्लम यही होता है, सबका फर्स्ट प्रोजेक्ट यही होता है मशीन लर्निंग में, कि प्रेडिक्टिंग द हाउस प्राइजेस बेस्ड ऑन द लोकेशन। सो लेट्स से इसको अगर हम रूल बेस के हिसाब से सॉल्व करना चाहते हैं, तो हमें नहीं क्या हर एक छोटे चीज़ के लिए रूल लिखना पड़ेगा कि उसकी लोकेशन कहाँ है, देन उसमें बेडरूम्स कितने हैं एंड ऑल दैट। और हर एक लोकेशन के लिए सपोज इसमें बोला है कि लोकेशन बेस्ड हमें प्रेडिक्ट करने हैं हाउस के प्राइजेस। सो अब डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में आप देखोगे तो कोई कोई सिटीज़ में कोई कोई एरिया में ज़्यादा महंगे घर होते हैं, कोई कोई एरिया में नहीं होते। तो आपको हर एक एरिया वाइज आपको रूल बेस में लिखना पड़ेगा कि अगर ये एरिया होता है तो इस हाउस की प्राइस ये हो सकती है, अगर ये एरिया होता है तो हाउस की प्राइस ये हो सकती है। जैसे कि मेट्रो सिटीज़ में हाउस की प्राइस ज़्यादा होगी क्योंकि वो मेट्रो सिटी के हिसाब से, बट आप रूरल साइड में जाओगे तो हाउस की प्राइस ऑब्वियसली आपको कम ही मिलेंगी। सो हर इसको डिफाइन करना पड़ेगा आपको रूल बेस्ड सिस्टम में। बट इन मशीन लर्निंग आप क्या कर सकते हो कि उसको डेटा प्रोवाइड करा सकते हो कि भाई इन रूरल एरिया में इतना इतना प्राइस है, देन मेट्रो एरिया में इतना प्राइस है। सो उस हिसाब से वो खुद से सीख जाएगा कि जब भी आप हाउस के लोकेशन एंटर करोगे, देन उसको आपको एक आइडिया दे देगा कि भाई इतना इसका प्राइस हो सकता है। सो इसे रूल्स बेस से तो सॉल्व नहीं किया जा सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा रूल्स लिखने पड़ेंगे आपको। ओके, अंडरस्टूड? एनीवन हैव प्रॉब्लम इन दिस? ओके, नेक्स्ट। ओके, प्रोसेसिंग ऑनलाइन पेमेंट्स। क्या लगता है यहाँ पे कौन सा अप्रोच ज़्यादा यूजफुल होगा, रूल बेस या मशीन लर्निंग? ओके, 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 लगता है बहुत लोगों ने सही गेस कर लिया। हाँ, तो यहाँ पे रूल बेस ही होगा क्योंकि यहाँ पे मशीन लर्निंग ऑब्वियसली अप्लाई नहीं हो सकता प्रोसेसिंग ऑनलाइन पेमेंट्स में। किसी को डाउट है इसमें? ओके, नाइस, सबने आई गेस रूल बेस ही बोला है तो ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, इसमें क्या है, क्लासिफाइंग एन ऑब्जेक्ट इन फोटो। क्या लगता है रूल बेस से सॉल्व हो पाएगा?
अच्छा ठीक है। सो ऑब्वियसली हमने पहले भी देखा है कि मतलब इस सेशन के स्टार्ट में देखा है कि हमने जो कैमरे के थ्रू जो भी इमेज आइडेंटिफाई की थी इट्स ऑल्सो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। सो यहाँ पे अगर वही बोला तो मैंने एक्सप्लेन किया था, जैसे कि आप अगर किसी डॉग को रिकॉग्नाइज करना चाहते हो तो आपको उसके हर एक छोटे पार्ट्स के लिए उसको कैसा दिखता है, साइज, कलर, सब के लिए रूल्स लिखने पड़ेंगे एंड वो बहुत लेंदी हो जाएगा एंड जर उसका एक्यूरेसी भी नहीं उतना मिलेगा जितना आपको एमएल मशीन लर्निंग मॉडल थ्रू मिल सकता है। ठीक है, सो यस राइट, इसका मशीन लर्निंग। ओके, जस्ट रिकैप ऑन रूल बेस्ड अप्रोच एंड मशीन लर्निंग अप्रोच। ठीक है, एक छोटा सा रिकैप देता हूँ इस पर कि क्या है बेसिकली दोनों भी। जैसे कि आपको मैंने बोला कि रूल बेस्ड जहाँ पे मतलब आपको जो डाटा सेट्स है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, मतलब जो इनपुट एंड आउटपुट के रिलेशन मोस्टली जहाँ पे लीनियर होते हैं एंड वैसे उस दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम में आप रूल बेस्ड अप्रोच यूज़ कर सकते हो, मतलब जहाँ पे आपको ज़्यादा रूल लिखने की ज़रूरत नहीं है एंड जो भी आपका डेटा है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, तो वहाँ पे आप रूल बेस्ड अप्रोच इजीली यूज़ कर सकते हो, मतलब वहाँ पे आपको मशीन लर्निंग अप्रोच यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मुझे भाने टू डॉक्टर डी वाई पाटिल जाना है एंड मेरे पास बस 5 रूट्स है। ठीक है, एंड देन आपको जस्ट उसमें से आइडेंटिफाई करना है कि सबसे शॉर्टेस्ट रूट कितना है, कौन सा है, एंड वही आपको डिस्प्ले करना था। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा मतलब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम नहीं था और आपको बहुत कम स्टेप्स लिखने थे, जस्ट कंडीशनल स्टेटमेंट कंपेयर करना था हर एक रूट एक दूसरे के साथ एंड जो सबसे शॉर्टेस्ट होगा वो आपको डिस्प्ले करना था। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब डाटा सेट कॉम्प्लेक्स हो जाता है एंड जो इनपुट एंड आउटपुट के जो रिलेशन होते हैं वो नॉन लीनियर होते हैं। सो जैसे कि इमेज रिकॉग्निशन एंड देन ऑडियो क्लासिफिकेशन, जैसे कि आपके चार्ट जीपीटीज हो गए, वहाँ पे आप रूल बेस्ड अप्रोच यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ पे आपको मशीन लर्निंग यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि मशीन लर्निंग कॉम्प्लेक्स डेटा के साथ बहुत अच्छी तरह से काम करता है एंड वो आपको जो आपको फॉर एग्जांपल जैसे ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन का जो भी काम है वो इजीली कर सकता है, आप वो रूल बेस्ड अप्रोच से नहीं कर सकते। ठीक है, सो दोनों के अपने कुछ फ़ायदे भी है एंड दोनों के नुकसान भी है। सो ओके, आफ्टर दिस Brian, you will continue. Hello. Saurabh, yeah, I'll do. Okay. So, Saurabh, please stop sharing your screen so I can also share my screen. Thank you. So, guys, once again, we will continue from here, which is also known as idea to implementation. So, let's watch this YouTube video. Suppose you have a great business idea and you've already gone through the effort to frame it as a machine learning problem. What next? How does your idea become a working machine learning solution? The process has 3 phases: data, modeling, and production. In the data phase, you identify the input data that your machine learning system needs to make successful predictions. Data may come from databases, log files, web pages, and even other machine learning systems. Once you identify data inputs and sources, you use statistical tools to draw insights about the data. The better you know your data, the more useful hypotheses you can make. Data rarely comes in an ideal state. Data needs to be collated, possibly by joining different data sources, and cleaned for the machine learning model to work optimally. Cleaner data results in better predictions. For a machine learning problem, you start with the input data and convert it into features. Features are key properties of the data. For a supervised machine learning problem, you transform the outcome into labels. Labels represent the intended output of the machine learning system. Joining data sources, cleaning the data, and engineering the features and labels takes time. Plan on spending a large portion of your time in the data phase. Modeling phase. Along with the features and labels, you set up the kind of machine learning system needed, called the model. Researchers have created all sorts of machine learning models, from simple to complex. Some models classify data. Other models predict numeric values. Tools like Google's TensorFlow support many types of machine learning models for various uses.
Before a model can make predictions, it needs training, which is like sending the model to school. First, there are lessons to learn from the data. Along the way, there are quizzes to check knowledge and correct any misunderstandings. In the end, there's a final exam. When training the model, you split the data into 3 sets: training, validation, and test. The training set corresponds to lessons. Here, the model processes data for the first time. It starts to infer patterns in the data to help make predictions. After you've trained the model once, you quiz it using the validation set. Based on how well the model does on the quiz, you may decide to adjust the model settings, or hyperparameters, which are like dials and switches for changing the model's behavior, and retrain the model again to give it the quiz again. The goal is to iteratively find settings that provide the best model quality on the validation set. When the model meets your success criteria, it's time for the final exam. Feed your model the test set. If the model predicts well, it passes the course and is ready for real use. Once your ML system is ready for the world, it's time to move the system into production. For starters, your system may need integration into a product. You need to figure out what this integration looks like and whether your model interacts with users. Models may need retraining on a regular basis with new data to pick up on new patterns or trends. This training could come from new data sets or from interactions with users. The system needs monitoring. This means tracking system outages, errors, data processing volume and speed, and how successfully it predicts results. Machine learning systems also require maintenance. As with any production system, this means fixing bugs, adding features that didn't make it into version 1, and the like. Machine learning specific maintenance could include testing other models and settings to see if performance improves. So yes, this was the video, and I just read in the chat box there is a question that we have is by Yash. When both approaches can be used, that is the approaches that we saw before of rule-based learning and machine learning. So if you ask me in basic simple words that how can you differentiate the two and how you can understand when to use what is take a simple example that you want to you add to no okay take a simple program of determining that who gets to vote. So basic understanding is that जिसका उम्र 18 के ऊपर है या 21 के ऊपर है उनको वोटिंग का ऑप्शन मिलता है और जिनका उम्र 18 या 21 से कम है उनको वोटिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है. सो अगर इसको कोड करना है तो हम क्या करेंगे, पहले एक इनपुट लेंगे एज का एंड वो एज का हम इफ कंडीशन लगाएंगे दैट इफ द एज इज लेस देन 18 you cannot get to vote, or if it is greater than 18 or 21 you will get to vote. Simple. This is called rule based. Basic if else conditions where you apply, that is called rule based. That is, if you do this then you will do that, if this happens then this will be done. But on the other hand, when you look at machine learning, it's completely the opposite. Machine learning, it creates its own rules. For rule-based learning, we are providing the rules, but machine learning creates its own rules. We provide the input and we provide the output. So you tell the machine, this will XYZ will be the input, ABC is the output. Now you determine how you will get ABC as the output. So there it keeps on, running different algorithms, and then it will create its own approach. After creating that approach, when you try to give it any input in future, it will predict that as the correct output. So basically, that is the idea of machine learning and rule-based learning, a basic difference. Coming back to our PPT, so the machine learning process. So like we conducted on an offline session, like I said, a keyword pipeline, this is how it is done. First, you focus on the user. What is the problem statement that you're trying to solve or define the objective? Then you collect the data. The data collection can be several ways. You scrape the internet, download data sets, etc., etc.
Then you perform a lot of data pre-processing, and a lot of different steps include between training and testing the model. And once all that is done, you come to train and test the model. After testing, you will predict and evaluate. Evaluate again, there are various evaluation metrics: precision, recall, F1 score, etc. And once you predict and evaluate, if the prediction is good, well and good, you can deploy the model. If it is not good, again come back, collect the data, retrain the model, retest the model, again predict and evaluate till you get a good enough model. Else, you can keep tweaking the parameters, and this process is known as hyperparameter tuning. So when you're continuously tweaking the parameters, you will be able to get a model which might be good enough with good enough predictions or good enough classifications, however. And next, we have another video. Let's play a game. Close your eyes and picture a shoe. Okay, did anyone picture this? This? How about this? We may not even know why, but each of us is biased toward one shoe over the others. Now imagine that you're trying to teach a computer to recognize a shoe. You may end up exposing it to your own bias. That's how bias happens in machine learning. But first, what is machine learning? Well, it's used in a lot of technology we use today. Machine learning helps us get from place to place, gives us suggestions, translates stuff, even understands what you say to it. How does it work? With traditional programming, people hand code the solution to a problem, step by step. With machine learning, computers learn the solution by finding patterns in data. So it's easy to think there's no human bias in that. But just because something is based on data doesn't automatically make it neutral. Even with good intentions, it's impossible to separate ourselves from our own human biases. So our human biases become part of the technology we create in many different ways. There's interaction bias, like this recent game where people were asked to draw shoes for the computer. Most people drew ones like this. So as more people interacted with the game, the computer didn't even recognize these. Latent bias. For example, if you were training a computer on what a physicist looks like, and you're using pictures of past physicists, your algorithm will end up with a latent bias, skewing towards men. And selection bias. Say you're training a model to recognize faces. Whether you grab images from the internet or your own photo library, are you making sure to select photos that represent everyone? Since some of our most advanced products use machine learning, we've been working to prevent that technology from perpetuating negative human bias. From tackling offensive or clearly misleading information from appearing at the top of your search results page, to adding a feedback tool on the search bar so people can flag hateful or inappropriate autocomplete suggestions. It's a complex issue and there's no magic bullet, but it starts with all of us being aware of it so we can all be part of the conversation. Because technology should work for everyone. Yes, so basically we just saw that. Now that video basically taught us about what bias is all about. Now bias as a simple English word, if you just look at it, bias matlab ki tarafdari karna. That means you're taking side of one person in a debate more than the other unnecessarily. Okay, so that is basically called bias. Now, if you just look at a simple example of prediction, where we are trying to predict different things of city versus a town, or rural area versus an urban area, and you have a data set. So you collect the data of the data set of rural area versus an urban area, and just for an instance, you assume that you have a lot of data of the urban area and very less data of the rural area. Okay. Now, if you have a lot of data of urban area and very less data of rural area, what's going to happen is that when you train your model, the model will become biased towards the urban area. Why? It's because it learned a lot more about the urban area than the rural area. Where is it the model's mistake that it became biased? No, it's our mistake. We provided an unbalanced data set. So, very simple understanding of what bias is all about. We'll proceed further.
Machine learning systems require lots of data to make successful predictions. What happens when that data is sensitive, such as people's names, credit card numbers, or medical histories? Sometimes, sensitive data is needed to train a model so it can make accurate predictions. But at the same time, this data must be carefully protected. This is the challenge of machine learning privacy. Let's look at an example. Suppose you create a machine learning model to diagnose illnesses based on a person's symptoms. Someone who reports a stuffy nose and a cough might receive the diagnosis, the common cold, whereas someone else with the same symptoms plus a high fever might be diagnosed with the flu. Plenty of other factors might influence the diagnosis too. Does the patient have a medical history of similar symptoms? Did she recently travel to another country or spend time on a farm with livestock? Are other family members or roommates sick at the same time? To train this model, you could feed it information about thousands of people and their symptoms, medical records, and demographic information. This data includes plenty of personal information that needs to be kept private. In addition, the data sets involved might contain other private information not directly relevant to medical diagnosis, such as patient contact information or the credit card numbers used to pay healthcare providers. What steps should you take to protect user privacy? Step 1 is to gather and select only the data that your ML system needs to achieve its goal. The less private data you have in the first place, the less you need to protect. This might seem like common sense, but it takes effort. It's easier to copy a whole database than to spend hours removing the parts that you don't need. Step 2 is to identify any data in your datasets that may be sensitive. For example, people's names, addresses, telephone numbers, email addresses, government ID numbers, and other personally identifiable information, or PII, should be kept private. Another type of private information is user-generated content, such as email messages, YouTube videos, blog posts, and any other content created by known individuals. Be sure to work with your product counsel to determine which types of information are considered private and how to handle them. You also need to make sure you have permission to use the data and whether the data has other privacy restrictions. Be sure to work with your product counsel here as well. Step 3 is to protect the private data. You can do this by controlling access to the data and your ML model, or by altering the data so it's not recognizable anymore, or both. Privacy is a critical concern in machine learning. When you maintain privacy, you build trust with users and protect your company's interests. Okay, so we just covered what is privacy in ML. I don't think there's anything to explain in that. We'll move ahead. Now we'll come to what can ML do. So basically understand that artificial intelligence is the grandfather, machine learning is its son, and deep learning is the grandson. A very basic analogy that we can use right here. So we can get an understanding whenever people talk about AI and ML and DL. So basically DL comes under ML and ML comes under AI. So AI is the big thing under which ML and DL come. And also data science is also comes under AI itself. It's all the same thing. And once again, so we have algorithms, technology, and big data. So when big data, algorithms, and technology all three are combined, you get machine learning. So one different kind of machine learning we have right here is called classification. Now classification is another important thing. Now if you want to predict if the, what do you say, the image is an animal, if it's a cat or a dog, what you will do, you will use classification. So when you use classification, the model will try to classify whether the image is an animal, or sorry, is a cat or a dog. So right here we have an example. If it is a lion, wildlife, mammal, the same thing. And basically the GIF that you'll see right here, the blue circles and the red circles, what happens here is that there is a line which is being drawn, a crooked line which is being drawn, trying to differentiate
or trying to create a divider between the blue dots and the red dots. So in classification algorithms, this is what happens. You draw a line between the two classes of predictions. So it will predict that which class it belongs to. And this function that is used right here is called sigmoid. I know it sounds pretty funny. It's called sigmoid. So it's a mathematical word. It's a formula, and we'll come to that also later. So basically, this is called logistic regression. Classification, we use logistic regression. Now, again, we have another app right here: sentiment evaluation, image label verification, and smart camera. Smart camera we have seen before. When you show an object to it, it will try to identify what the object is. Sentiment evaluation is it will try to look at your face and identify that what emotion is there on your face: happy, sad, crying, etc., etc. And image label verification. Now, this is what do you say? A little advanced thing. You pass an image to it, and it will identify what is happening in the image. So that's the idea behind image label verification. And another different set of algorithm that we have in machine learning is called regression. Now, I think all of you might know what stock market is, and everyone is behind predicting what the outcome will be of any stock. So they want to invest, and their investment will be with good returns. So the ROI will be good. So basically, in that, we use something called a stock market prediction, which uses this algorithm of regression. So when you want to identify that what will be the shortest distance between Hyderabad to Mumbai, we will use an algorithm of regression. So it will know the all the different possible routes between Mumbai and Hyderabad, and will identify which route is the smallest. There's another algorithm that is used right here is called the pathfinding algorithm. Maybe the A-star algorithm or Dijkstra's algorithm. All of these, they are all actually used right here in Google Maps and to find the shortest route possible. So yes. Now another set of algorithm that we have is called clustering. Now what happens in clustering is that, like I mentioned before, in classification, when you'll remember, there were two classes of blue circles and red circles, and we drew a line between the two classes to to classify the two classes. Now again, here you have three classes: light blue, blue, and red. Three classes. Now, if you want to classify three classes, you will have to draw three distinct lines to differentiate all the three classes. So that is basically what clustering does. When you have clustering, it will try to group each class points at one point. That means all the dark blue circles will get collected at one place, red circles will get collected at one place, and light blue circles will get collected at one place. So that is called clustering. So next time when it wants to predict any outcome, whatever outcome will come, it will either belong to the red class, light blue class, or the blue class. So basically, that's how clustering works. And we have the next thing is semantic similarity. Could be great example to understand clustering. Visit this website to understand semantic similarity. I'm assuming that many of you all might not know what semantic is all about. Semantic means understanding the meaning. If you Now imagine that you're using ChatGPT, and when you're using ChatGPT, for example, you just want to quick glance through a website, but you're bored. You don't want to read a long paragraph. So what you will do, you will tell ChatGPT that you will give ChatGPT a large prompt, copy paste the whole content of the website or the paragraph, and to tell ChatGPT summarize this whole content in maybe 2 or 3 lines. So I don't want to read the whole thing. I don't have that much time. So ChatGPT will give you the summarized content in 2 or 3 lines. So that is called semantics. So you're trying to understand the meaning behind whatever content is given to you. Semantic analysis is you're trying to understand the emotion between people when they're talking to each other. So all that comes under it. Then we have another thing called sequence prediction. When you're typing on your keypad, you are typing, maybe you want to wish someone good morning. The moment you type GOOD, the next prompt you get above the keyboard is afternoon, morning, night, all that. But most probably you will get the most highest prompts will be morning only, because early morning at 7 o'clock you cannot be wishing anyone good night. So the highest probability of a prompt you will get is morning only. So this is called sequence prediction. So here we use some concepts like
n-gram, bigram, trigram. These things also come under it. And you can see the sequence prediction in action using the glide type, handwriting recognition, or translation task from the cloud source app. So if we just look at it, okay. So basically this is an app which needs to be installed, and right now we cannot install that. It will take a lot of time. So I'll anyway share the PPT. You all can always try it yourselves. Coming to the next slide. Now I think Saurabh, you can take over. You can explain the further slides. Okay, I will share it. सो स्टाइल्स ट्रांसफर बेसिकली इसमें क्या होता है कि आप है ना मतलब सपोज अभी दो इमेजेस है, ठीक है, एक इमेज है आई गेस टॉर्टोइस का और एक इमेज है एक आई गेस हाँ वेव्स का है, ठीक है। तो आप यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहे हो, जो टॉर्टोइस का इमेज है एंड जो वेव्स का इमेज है इसे मिक्स कर रहे हो, इसके मैप कर रहे हो। मतलब ये इमेज मतलब टॉर्टोइस का इमेज आप वेव्स के ऊपर मैच कर रहे हो एंड देन आपको एक न्यू इमेज फॉर्म होती है जो मिक्सअप है इस टू इमेजेस का, एक टॉर्टोइस का एंड वेव्स का। सो आप देख सकते हो इसका आउटपुट कुछ ऐसा आता है। मतलब आप इसको वेव्स का भी टेक्सचर देख पा रहे हो एंड आप टॉर्टोइस भी देख पा रहे हो इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये होता है कि यहाँ पे आप स्टाइल कौन सा भी ट्रांसफर कर सकते हो। यहाँ पे आप जैसे कि इन लोगों ने वेव्स यूज किया है तो आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, कोई भी फेमस पेंटिंग ले सकते हो। जैसे कि आपने अभी देखा होगा रिसेंटली कि मतलब जो एआई के बहुत सारे मॉडल है वो स्टाइल मतलब आपकी इमेज का जो स्टाइल है उसको ट्रांसफर कर देते हैं किसी फेमस पेंटिंग्स के स्टाइल में और एनीथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हम दो इमेजेस है वो एक दूसरे पे मैप हो रहे हैं, उसका जो हमारी ओरिजिनल इमेज थी उसका बेसिकली स्टाइल जो है वो ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे जैसे कि वेव्स की फॉर्म में हो रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज क्विजेस। ओके, सो फर्स्ट क्विज है कि टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग्स। ओके, सो क्या लगता है यहाँ पे मतलब ये किस डोमेन में लाई करता है मशीन लर्निंग के? Recommending the next word in the Android SMS app based on the words typed so far. क्या लगता है आपको किस डोमेन में ये प्रॉब्लम जो है ये लाई करना चाहिए? क्लासिफिकेशन में, क्लस्टरिंग में, रिग्रेशन में, सीक्वेंस प्रेडिक्शन में या स्टाइल्स ट्रांसफर में? कोई आंसर देना चाहेगा इसका? ओके, राइट, वन आंसर। ओके, सो इसका आंसर है वेरी इजी, सीक्वेंस प्रेडिक्शन। बेसिकली आप पे आप सीक्वेंस प्रेडिक्ट कर रहे हो, मतलब एक वर्ड टाइप करके देन उसके बाद का वर्ड क्या हो सकता है ये आपके फिर एक तो एक आपकी जो भी प्रीवियस हिस्ट्री होगी सर्च करने की उसके हिसाब से भी हो सकता है एंड जो भी आपने वर्ड्स प्रीवियसली टाइप किए हैं उसके हिसाब से भी आपको वो नेक्स्ट प्रेडिक्शन बता देगा कि क्या होना चाहिए इसके बाद। ओके, सो नेक्स्ट क्विज इज किसी को प्रॉब्लम है फर्स्ट क्विज में? ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्विज, लेबलिंग अ ईमेल एज अ स्पैम और नॉट स्पैम। ओके, और कोई आंसर्स कि किस डोमेन में लाई करना चाहिए? ओके ओके ओके, सो सबके आई गेस अलग अलग आंसर्स आए हैं ऑलमोस्ट। सो लेट्स सी, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि लेबलिंग ईमेल एज अ स्पैम और नॉट। सो जैसे यहाँ पे हमारे पास दो क्लासेस है, एक तो स्पैम ईमेल की और दूसरी है नॉट स्पैम ईमेल की। हमें बेसिकली क्या करना है, इन दोनों में क्लासीफाई करना है कि कौन सा ईमेल एज अ स्पैम होगा और कौन सा नॉट स्पैम होगा। मतलब ये हम अगर ये प्रॉब्लम हम रिग्रेशन से करने जाते हैं तो हम उससे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बेसिकली हमें रिग्रेशन क्या करता है, कंटिन्यूस आउटपुट प्रेडिक्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे हम एक स्पेसिफिक आउटपुट प्रेडिक्ट करना चाहते हैं दो कैटेगरीज के बीच में, एक तो ईमेल स्पैम होगा या नॉट स्पैम होगा। तो ये जो प्रॉब्लम है वो लाई करती है क्लासिफिकेशन के अंदर। बेसिकली हम क्लासीफाई कर रहे हैं यहाँ पे दो क्लासेस के बीच में।
Okay, understood? Okay, so next, हाँ right hand. Okay, so next है कि identifying the trends among a group of people who have bought a new music release. So क्या लगता है कौन से इसमें आएगा? Any guesses? Okay. 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 सो ये आता है क्लस्टरिंग के अंदर. बेसिकली हमने जैसे बोला था कि क्लासिफिकेशन में हम एक पर्टिकुलर सपोज हम ईमेल एंड नॉट मतलब ईमेल स्पैम है या नहीं है, ये अगर क्लासीफाई करना चाहते हैं तो हम क्लासिफिकेशन में उसके लेबल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब राइट आंसर्स कि ये ईमेल की आईडी है और ये ईमेल स्पैम है या नहीं है. बट यहाँ पे क्या है कि इसमें हमारे पास जो डाटा अवेलेबल है ना, वो बस ये डाटा अवेलेबल है कि आइडेंटिफाइंग द ट्रेंड अमंग अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव बॉट अ न्यू म्यूजिक रिलीज. मतलब हम ये क्लस्टरिंग के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं. बेसिकली क्लस्टर में क्या होगा कि अकॉर्डिंग टू मतलब जो भी उनका ट्रेंड में जॉनर चल रहा है, तो अलग अलग जॉनर से हिसाब से वो क्लस्टर्स ग्रुप्स तैयार करेगा इस प्रॉब्लम में. ओके, सो बेसिकली ये क्लस्टर फॉर्म करेगा जो भी हमारे पास डाटा सेट्स अवेलेबल है इसका, मतलब ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करने में ऑन बेसिस ऑफ कि आपने कौन सी म्यूजिक रिलीज खरीदी है. सपोज आपने पॉप के रिलेटेड खरीदी, आपने कंट्री म्यूजिक के खरीदी है म्यूजिक्स. सो ये बेसिकली एक क्लस्टर्स फॉर्म करेगा कंट्री म्यूजिक के एंड देन पॉप के. सो ये उसके थ्रू सॉल्व हो सकता है. इसको कोई प्रॉब्लम है इसमें? हमने क्लस्टरिंग आई गेस, हाँ प्रीवियस सेशन में भी क्लस्टरिंग. इनकेस अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मैं और एक बार एक्सप्लेन कर सकता हूँ. किसी को प्रॉब्लम है? ओके, नेक्स्ट. सो नेक्स्ट है a bot that reads the news in the voices of famous actors. So any guesses on this? Okay. Okay. सो राइट, ये बेसिकली जो स्टाइल है वो ट्रांसफर कर रहा है. जैसे कि हमने इमेज की इसमें देखा था कि हमारे पास एक टॉर्टोइज की इमेज थी, देन उस पर हम एक वेव्स की जो इमेज है वो मैप कर रहे थे ना, हमें एक जो न्यू इमेज मिल रही थी उसमें बहुत स्टाइल थे, मतलब एक वेव्स का भी स्टाइल था एंड जो टॉर्टोइज है वो भी था वहाँ पे. तो यहाँ पे भी बेसिकली वही हो रहा है. यहाँ पे हम एक बॉट जो है उसके वॉइस में हम एक फेमस एक्टर की वॉइस है जो मैप कर रहे हैं, जो हमारा आउटपुट होगा वो फेमस एक्टर के वॉइस में होगा. ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्विज इज डिटरमाइनिंग द वर्कआउट एक्टिविटी बेस्ड ऑन द फोन मूवमेंट. क्या लगता है इसका क्या होगा, किस डोमेन में लाई करेगा ये? एनी गेसेस? ओके, लेट्स सी इसका आंसर क्या. इसका आंसर है क्लासिफिकेशन में लाई करेगा. बेसिकली यहाँ पे हम क्लासिफाई कर रहे हैं कि आपकी मोबाइल की जो मूवमेंट है एंड जो आपकी वर्कआउट एक्टिविटी है, मतलब सपोज आपके जब आप वर्कआउट करते हो बहुत से एप्लीकेशंस अवेलेबल है जो आपको पूरा ट्रैक कर सकते हैं, वाइल आपका जो मोबाइल है जो आपके मतलब हाथ पे अगर इनकेस यू हैंग इट ऑन योर हैंड और यू कैन कीप इट इन योर पॉकेट,
सो डिटेक्ट कर सकता है कि आपकी वर्कआउट मूवमेंट कैसे होती है। ये बेसिकली लाई करता है क्लासिफिकेशन के अंडर। ओके, द नेक्स्ट क्विज इज आइडेंटिफाइंग ऑफ फेमस लैंडमार्क्स इन फोटो। क्या लगता है किसके कौन से डोमेन में लाई करेगा ये प्रॉब्लम? Any guesses on this? Okay. 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 ओके, सो ये लाई करेगा क्लासिफिकेशन में। आप इसे मतलब लैंडमार्क्स को आइडेंटिफाइज को आप रिकॉग्नाइजेशन प्रॉब्लम के जैसा भी ये कर सकते हो। दिस इज द ऑब्जेक्ट रिकॉग्नाइजेशन। जैसे कि जो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के जितने भी मॉडल्स होते हैं वो फर्स्ट तो होता है उसका एक होता है ऑब्जेक्ट लोकलाइजेशन एंड देन दो स्टेप्स होते हैं। एक फर्स्ट तो होता है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के मॉडल में फर्स्ट स्टेप होता है कि ऑब्जेक्ट लोकलाइजेशन, मतलब इमेज में कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट है इसको लोकलाइज करना, एंड देन होता है क्लासिफिकेशन। मतलब ये ऑब्जेक्ट सपोज आपके पास डेटा है मतलब फेमस लैंडमार्क्स का, तो यहाँ पे बस आप मशीन लर्निंग को एक फोटो दे रहे हो एंड जो उसके पास जो डेटा है उसमें वो क्लासिफाई कर रहा है कि कौन सी ये हो सकता है। उसके शेप देख के उसका कलर देख के वो जस्ट मैच कर रहा है उसके प्रीवियस डाटा में। मतलब सपोज आपने ताजमहल का दिया है इमेज, ठीक है, बट आपके पास तो बहुत सारे इमेजेस है ना लैंडमार्क्स के। मतलब ताजमहल का आपने इनपुट दिया है इमेज मॉडल को, एमएल मॉडल को, उसको प्रेडिक्ट करना है कि ये कौन सा मतलब फेमस लैंडमार्क है ये, ठीक है। सपोज आपने ताजमहल का दिया है बट हमारा जो डेटा है उसमें तो एफिल टावर, ताजमहल एंड जितने भी फेमस लैंडमार्क्स है वो थे। ये बेसिकली उनमें से क्लासिफाई कर रहा है कि आपका कौन सा होगा। सो इट्स अ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। नेक्स्ट है सजेस्टिंग द स्पेलिंग करेक्शन। ओके, क्या लगता है इसमें मतलब कौन से डोमेन में आगे नहीं लाई करेगा? एनी गेसेस? ओके, सो ये लाई करता है क्लस्टरिंग में। एक्चुअली इसमें मुझे भी थोड़ा डाउट है, तो आई थिंक ब्रायन, कैन यू एक्सप्लेन दिस? Yes, Saurabh. So basically, this could be classification also and clustering also. Higher probability clustering हो सकता है ये, क्योंकि spelling corrections हम ऐसे नहीं बोल सकते ना कि अभी समझ लो कि बहुत सारे users टाइप कर रहे हैं on their Google keyboard, and the Google is collecting all the words that we type on Google keyboard. So when it collects all these words, it will keep collecting the words which are the most frequently used. सो अगर समझ लो कि मॉर्निंग वर्ड बहुत ज़्यादा टाइप हो रहा है बहुत लोगों से, तो मॉर्निंग वर्ड का एक क्लस्टर बन जाएगा। ओके, एंड देन अगर कोई टाइप कर रहा है गलती से MORNENG, तो ई वाला जो लेटर है गलत हो गया, दैट मीन्स दैट लेटर इज बिकम रॉन्ग। सो देन इट विल नॉट मैच विद दैट क्लस्टर ऑफ मॉर्निंग, हेंस it could be an error. So that way it determines if through clustering if there is an error or not. So I hope the doubt is cleared. Saurabh, you're on mute right now. ओके, ओके, आई एम बैक। सो सजेस्टिंग द स्पेलिंग करेक्शन समझ गए। नेक्स्ट है प्रेडिक्टिंग द क्वालिटी स्कोर फॉर एडवर्टाइजमेंट।
सो यहाँ पे हमें एक क्वालिटी स्कोर प्रेडिक्ट करना है एडवर्टाइजमेंट के बेसिस पे. ओके. राइट. सो ये तो रिग्रेशन का प्रॉब्लम है, सिंपल है. बेसिकली हमें यहाँ पे एक पर्टिकुलर नंबर प्रेडिक्ट करना है, एडवर्टाइजमेंट मतलब कैसा था उसकी क्वालिटी एडवर्टाइजमेंट के बेसिस पे, क्वालिटी स्कोर. ओके. स्टाइल नहीं, ये नहीं हो सकता, स्टाइल्स ट्रांसफर नहीं हो सकता. बेसिकली हम यहाँ पे कर क्या रहे कि हमें एक क्वालिटी स्कोर प्रेडिक्ट करना है, हम यहाँ पे प्रेडिक्शन कर रहे हैं. स्टाइल ट्रांसफर में हमने देखा था कि हम एक पर्टिकुलर मतलब डेटा पे एक और एक इमेज मतलब फॉर एग्जांपल इन और इमेज केस वहाँ पे हम एक इमेज मैप कर रहे थे टोटल्स केस पे, तो हमें एक न्यू इमेज मिल रही थी. तो यहाँ वहाँ पे मतलब स्टाइल जो होता है उसका ट्रांसफर हो रहा था. यहाँ पे एक प्रेडिक्शन का प्रॉब्लम है. यहाँ पे हम एडवर्टाइजमेंट को देख के उसका क्वालिटी स्कोर प्रेडिक्ट करना है, तो ट्रांसफर में तो नहीं आएगा. ठीक है. सो द नेक्स्ट इज, शायद इसका आंसर ऑलरेडी दिया गया है. ओके. एस्टिमेटिंग द अराइवल टाइम बेस्ड ऑन डे बेस्ड ऑन टाइम ऑफ डे एंड ट्रैफिक. आई गेस इसका आंसर सबको राइट ही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी दिया है. सो राइट, इसका आंसर था रिग्रेशन. बेसिकली यहाँ पे भी हम टाइम प्रेडिक्ट कर रहे हैं ऑन बेसिस ऑफ मतलब क्या रश आवर्स जो होते हैं सिटी में एंड जो ट्रैफिक होता है उस हिसाब से हम एक एस्टिमेटिंग टाइम कर रहे हैं, मतलब कितना टाइम लगेगा फ्रॉम टू रीच फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. ओके. आई गेस इसका भी आंसर ही दिया है. ओके. ट्रांसलेटिंग बिटवीन टू लैंग्वेजेस. Brian, can you explain this? Okay. Okay, yes. Thank So you. translating between two languages, sequence prediction, right? So okay, so basically whenever we use text, right? So what we use is something called NLP. NLP stands for Natural Language Processing. So when we're using this NLP, what happens is that we are getting input of maybe English and you want output of Hindi maybe. So when you're taking input of English, it will use NLP. It will create tokens, do tokenization. So okay, there are various steps that you do in that, and you create a model that is able to understand what each word means. And then you also have another model which you give input of Hindi language. It will create the tokens, tokenization in Hindi language, and it will create a model which understands Hindi language. So once that is done, what happens is that we try to convert English into Hindi. I don't know exactly how it works. I'll look at it once and I'll get back to this. But basic understanding is that एक मॉडल इंग्लिश पे होगा, एक मॉडल हिंदी पे होगा. So जो English to Hindi conversion है, it uses NLP only and it gets the conversion. That's what I know. So yes, sir, we can continue. So I guess PPT is over now. इसमें कुछ किसी को कोई प्रॉब्लम है? सो बेसिकली ये ओवरव्यू था हमारे पीपीटी का. फर्स्ट हमने देखा कि व्हाट इज एमएल, देन हमने देखा कि एमएल एल्गोरिदम्स एंड रूल बेस्ड एल्गोरिदम्स क्या होते हैं, आइडिया टू इम्प्लीमेंटेशन. देन हमने डिफरेंस देखा कि एआई वर्सेस एमएल एंड डीप लर्निंग का. देन हमने मशीन लर्निंग के टाइप्स देखे, डिफरेंट क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, रिग्रेशन, सीक्वेंस प्रेडिक्शन एंड स्टाइल्स ट्रांसफर. इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप यू कैन आस्क क्वेश्चंस. So what's the type of ML is? Okay. सो चैट जीपीटी में उन्होंने जो यूज़ किया है वो एक एनएलपी मॉडल है. चैट जीपीटी बेसिकली वो जो इतना भी मतलब टेक्स्ट बेस्ड काम होता है ना, मोस्टली थ्रू हम एनएलपी सॉल्व करते हैं. एनएलपी मीन्स नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. सो
आई थिंक मुझे उतना आइडिया नहीं है कि एग्जैक्टली चार्ट जीपीटी वर्क कैसे करता है अंडर द हुड, बट बेसिकली इट्स कम अंडर द एनएलपी पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग. ओके. Yes, so basically, ChatGPT कैसा काम करता है? Like सौरभ said, even I don't have the exact idea how it works. वो जो रिसर्च पेपर है एक बार पढ़ना है. हाँ, yeah, also जो ChatGPT है, ChatGPT 3, GPT 4, Stable Diffusion, and all of these different big OpenAI के जो products है, इन सब चीज़ों के ना there are something called research papers. So if you just Google them, you will get the research papers. Now, in these research papers, there is everything written. What is the model about? How it works? What algorithms are used? What is the mathematics behind it? Where it's going to be used in future? Every single thing is written behind it, and you all can just have a look at it once as you all are interested. I personally haven't read it. I am assuming even Saurabh has not read it. We'll come to that in the future. So basically, ChatGPT uses something called LLM. LLM stands for Large Language Model. So this large language model means that it has billions and billions of GBs or maybe petabytes of data. Now this data is collected from Reddit, Twitter, different emailing websites, blogs, every single thing, you name it, and all of this data is collected from all of these different websites, Stack Overflow, every single thing. So ChatGPT के लिए जो data set use किया गया है, that is an extremely beautiful data set, extremely strong data set. So using that, they have built that ChatGPT model using the NLP algorithms and various different algorithms as well. Optimization techniques have been used on that, and they have built that model as such. So that is the idea behind it, as per my understanding. I don't have very deep understanding, but you all can also read it once, and we'll also get to that later. Yes. Any more questions, anyone? It could be anything that you all have any doubt in some other topic in ML, या फिर अभी जो बात किया वो कुछ समझा नहीं, anything. ओके सो लेट्स अज्यूम कि आप में से किसी को कोई डाउट नहीं है एंड आज का जो पीपीटी है हमने वो कवर कर लिया है. अभी आगे का जो स्टेप्स होगा, लेट्स डिस्कस दैट. इट्स बिकॉज दिस एमएल स्टडी जैम इज नॉट अ वन डे इवेंट. दिस इज एक्चुअली देयर आर 5 डिफरेंट डेज दैट वी आर गोइंग टू बी कंडक्टिंग दिस एंड डे 1 आज खत्म हो गया. डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 कैसे होने वाला है, आपको क्या करना है उसमें, हम क्या हेल्प कर सकते हैं आपकी, we'll discuss all of that right now. Okay, so basically this ppt we finished right now and Saurabh, could you just stop sharing screen? I'll share. Yeah, thank you so much. Okay, so guys, as my screen is visible, so what the next step is that we have been provided with courses. These are free courses on Kaggle. Now, अब अगर आप सबको पता है कि हैकर रैंक क्या है, लीड कोड क्या है, कोड शेफ क्या है, ये सारे वेबसाइट्स कॉम्पिटिटिव कोडिंग के लिए है, वेयर यू प्रैक्टिस योर डीएसए, दैट मीन्स डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स. एम आई राइट? So basically, these are the websites that you use for CP. Now, Kaggle is a website that you use for machine learning and deep learning. I would suggest you all that who are interested, please make an account at Kaggle and go through the datasets available. Every single dataset has its own solution given by many people. Like there will be a lot of solutions to each problem. So basically, Kaggle में कैसा होता है is that you have a lot of problems given कि image classification, stock market prediction, or house price prediction, etc. etc. There are a lot of different things. So basically, ये problems को बहुत सारे लोगों ने solve किया है and datasets भी available है वहाँ पे. So आप datasets download कर सकते हो, जो solved solutions है वो भी download कर सकते हो and download कर after downloading you can use it and understand कि ये step क्यों किया है, वो step क्यों किया है, हम क्या कर सकते हैं and all of that. So basically ये website पे courses are available and this is one of the course called computer vision. Okay, this is where you use convolutional neural networks and see right here you have CNN here, CNN and ReLU,
max pooling, sliding window, custom, whatever. We'll come to all of that. So ये जो कोर्स है, आप ये कोर्स आपको ये कोर्स करना है, एंड ये कोर्स एक्चुअली 4 आवर्स का है. सो जो कोर्सेज मिले हैं हमको, ईच कोर्स 4 आवर्स का है. आई थिंक देयर आर अ सेट ऑफ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मे बी 7-8 कोर्सेज. 7-8 courses are given to us, which we will be providing to you all sequentially, step by step. And so आपको ये कोर्सेज खत्म करना है. सो अभी वीक 2 का जो कोर्स है, देयर आर 2 courses of week 2, 2 courses of week 3, 1 course of week 4 and 2 courses of week 5. सो हम क्या करेंगे, मैं अभी आज आपको वीक 2 के दोनों कोर्सेज शेयर करूंगा. आप Kaggle पे अकाउंट बनाएंगे एंड ये कोर्स खत्म कीजिए. एंड आफ्टर 2 days we will hold another session to discuss the doubts or any irregularities while solving the course if you all have faced. So I'll just give a small understanding how to solve the course and how we can do that. Okay. Otherwise, just a second. I'll take an easy example. Just 1 second, guys. मैं वापस screen share करूँगा. So yes, my screen is visible, right? And Sarthak, will come to your question. Just give me 5 minutes. Okay. So basically ये जो कोर्स है मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ, सौरभ भी सॉल्व कर रहा है साइड बाय साइड, ताकि आपको जब डाउट्स रहे या कुछ रहेगा तो we'll be able to help you all. So जब ये कोर्स दिखेगा आपको, अभी ये lessons है, lesson 1, lesson 2, lesson 3, all of that. You click on lesson 1 and आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन मिलेगा विद सम एक्सप्लेनेशन एंड सम डायग्राम्स, एवरीथिंग विल बी गिवन. सब दिया गया है यहाँ पे, आप पढ़ लेना. एंड जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो राइट हैंड साइड पे आपको ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट ट्यूटोरियल. क्लिक ऑन स्टार्ट ट्यूटोरियल, तो आपको रीडायरेक्ट किया जाएगा Kaggle के यहाँ पे सॉल्विंग वाले पेज पे. तो आप यहाँ पे भी पढ़ना, यहाँ पे सब दिया है, एक्सप्लेनेशन सब दिया है, कैसे क्या करना है एंड ऑल ऑफ दैट. गो थ्रू इट वंस. And then again on the right hand side, you see try the exercise. Start exercise, click on that. And people who have attended the offline session that we had conducted last time, we covered something called Jupyter Notebooks. Now Kaggle also supports Jupyter Notebooks and this is also one of them. People who don't know what Jupyter Notebooks are, प्लीज एक बार YouTube कर लेना कि Jupyter Notebooks क्या है. बहुत सिंपल है, आपको 2 मिनट भी नहीं लगेगा समझने को. एंड यहाँ पे भी Jupyter नोटबुक ही दिया है. सो यहाँ पे एक छोटा एक्सप्लेनेशन दिया कि क्वेश्चन क्या है एंड एक्सरसाइजेस यहाँ पे है. नाउ कोड्स आर ऑलरेडी गिवन, देयर आर सम कोड्स गिवन, आपको थोड़े से चेंजेस करने हैं उसमें बस. सो बेसिकली यहाँ पे ये कोड दिया है एंड स्टेप 1 लोडिंग डेटा. ना अभी डेटा सेट जो है ये हमारा डेटा सेट है train.csv. ओके, फाइल पाथ कैसा है, इनपुट के अंदर होम डेटा फॉर एमएल कोर्स, उसके अंदर ट्रेन CSV. अभी हाथ पे देखिए राइट हैंड साइड पे इनपुट फोल्डर, उसके अंदर होम डेटा फॉर एमएल कोर्स एंड इन दैट यू हैव अ train.csv फाइल. दिस इज आवर CSV फाइल. ओके, you have this file path stored in a variable and then you will use the pandas library to get the contents of your CSV file using a function called read CSV. So आप एक नया वेरिएबल डिफाइन करते हो, होम डेटा इज इक्वल टू pandas डॉट रीड CSV एंड पैरामीटर में आप पास करते हो ये वाला वेरिएबल आयोवा फाइल पाथ. ओके, एंड देन यू प्रिंट द होम डेटा. जब आप प्रिंट करोगे तो आपको ये आउटपुट मिलेगा. ओके, दिस इज द होल आउटपुट यू विल गेट. नाउ देयर इज अ फंक्शन दैट्स गिवन हियर step1 डॉट चेक. ये वाला जो फंक्शन है इट इज गिवन बाय Kaggle itself. इट इज ऑलरेडी देयर इन द सेल. डू नॉट मेक एनी चेंज टू दैट. ये क्या करने वाला है, आपका जो आउटपुट है उसको चेक करेगा. अगर आपका आउटपुट करेक्ट है तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा. ओके, सो आपको सारे सेल्स ऐसे सॉल्व करते जाने हैं तो आपका आउटपुट जो है करेक्ट आना चाहिए. सो जहाँ जहाँ करेक्ट आता है यू विल कीप गोइंग अहेड एंड यू विल कंप्लीट द कोर्स एज इट इज. ओके, सो step1 डॉट चेक, पहला जो स्टेप है step1 लोडिंग डेटा, इसका आउटपुट आ गया करेक्ट, नो प्रॉब्लम इन दैट.
अगर आपको डाउट आ रहा है कि कैसे सॉल्व करते समझ में नहीं आ रहा है, so there is another cell given here, step1.hint, step1.solution. Run this code block and you will understand this code given right here. मतलब आपको छोटा सा एक कोड दिया जाएगा which will help you get your solution. It will not be a direct answer, which will help you get your solution. Okay, so you'll use that, get your solution, go to step 2 and next code आप लिखना. तो ऐसे करते करते solve everything, you will get the answer and then you finish. So देखिए कितना छोटा है, it barely got over in 4-5 cells itself and this is over. So once this is over, आपको right hand side पे एक option आएगा, start go to the next learning module, which is your first machine learning model. Okay, ऐसा click करना and so yes, it will take you here to this new web page. Again यहाँ पे छोटा information दिया है, पढ़ लेना इसको. नीचे जाओगे ऐसा राइट हैंड साइड पे फिर आएगा स्टार्ट एक्सरसाइज. अगेन स्टार्ट एक्सरसाइज करना एंड सॉल्व द कोड्स एज इट इज गिवन. ओके, यू विल गेट द आउटपुट. कीप गोइंग दैट वे, यू विल फिनिश वन कोर्स. ऐसा पूरा सॉल्व करना. सी आप पे देखिए यहाँ पे कोड डाला है मैंने एंड स्टेप 1 डॉट चेक, आंसर चेक करता है, करेक्ट आता है, वेल एंड गुड. नहीं आ रहा है, यूज द हिंट. नाउ सी दिस हिंट्स एंड सोल्यूशन इज कमेंटेड आउट योर. ये कमेंट को हटाना, कमेंट को हटा के सेल रन करना, रन करके जो आउटपुट आता है यूज दैट एंड यूज इट इन योर कोड. तो आप एक हिंट यूज कर सकते हो. एक एक करके पूरा सॉल्व कर लेना एंड यू विल बी एबल टू फिनिश द होल थिंग. वंस दैट इज डन, अब ये राइट हैंड साइड पे देखना क्या आ रहा है. अप नेक्स्ट मॉडल वैलिडेशन, स्टार्ट ट्यूटोरियल. ओके, क्लिक ऑन दैट एंड कीप गोइंग अहेड. वन बाय वन ऐसे सारे खत्म करने हैं. वीक 2 का मैं आपको लिंक शेयर करूंगा, ऐसे कोर्स आएगा उस पर. तो ये खत्म कर दीजिए प्लीज विद इन 2 days टाइम. इफ यू फेस एनी डाउट प्लीज आस्क ऑन द ग्रुप इटसेल्फ, या फिर ग्रुप पे नहीं पूछना तो यू कैन आस्क पर्सनली ऑल्सो. आई एंड सौरभ बोथ ऑफ अस आर देयर. सो आई होप you all can save our numbers. It is there on the AIML GDSC group. My name is Brian Thomas, आपको मिल जाएगा. And our AIML co-lead is Saurabh Alone. उसका भी नाम सर्च कर लेना, you will get. You can contact either one of us if you are facing any doubts. So please try and complete the week 2 courses within 2 days. We'll have another session after 2 days, and we need to finish this by the 12th of April. इसीलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी खत्म कर रहे हैं. Okay. So basically this is what needs to be done here. So yes guys, do you all have any doubt regarding this course right here? What are the next steps that we are trying to do? Yes, does anyone have any doubt for this? Like I said, please go through what a Jupyter notebook is once, what are cells, how do you run them and all. You will understand very easily. If no one has any doubts regarding these further links and all, good, that's fine then, no doubts. I'll share the further things. And Sarthak, coming to your question that DALI, does it use style transfer? So I don't think DALI uses style transfer. DALI uses an an concept called GAN. GAN stands for Generative Adversarial Networks. So it basically creates new images. It is not using a style of a previous thing and transferring it to a new one. No, it is actually creating new images from scratch using the trained images it has been trained on. So you can go through the research paper of DALI also, and you can read what GANs are all about. It's called GANs, Generative Adversarial Networks. Just like convolutional neural networks, this is generative adversarial networks. So you can go through that once. Yes. Does anyone else have any doubts? Please shoot. Okay, with input image and prompt to change the image to Van Gogh. Okay, sorry Sarthak, I don't understand your question. I personally haven't used DALI till now, so I don't know exactly what you're asking. You can always ask ChatGPT whatever you need to. It will always answer your doubts. I use ChatGPT the whole day myself.
So again, we'll try to see what DALI is, and I'll get back to you whatever your doubt is. So if no one has any other doubts, we can end the session right now. Okay, Nihar, is the course long? How much hours to dedicate? As I said, each course approximately will take only 4 hours. It's a very small one. You can use ChatGPT for your help also if you're facing a lot of issues while getting the code. Mostly you will not because they're easy, and using the hints and solutions given in the code itself, you will get the code snippets. You can use that and complete the answers. ओके, एंड ऐसे हर वीक के 2 कोर्सेज मिलेंगे एंड आपको 2-2 दिन में ख़त्म करने हैं. सो वीक 2 का जो कोर्सेज है मैं आपको आप भी शेयर करूंगा, तो आपको 2 दिन मिलेंगे, आपको 2 दिन में कर देना. आई विल अपडेट ऑन द ग्रुप व्हेन द नेक्स्ट सेशन विल बी. टिल देन ट्राई एंड कंप्लीट वीक 2 के कोर्सेज. एंड इफ यू हैव एनी डाउट completing the courses, ping on the group anytime or ping personally anytime. Don't hesitate. So if you ping on the group, it will clear the doubts of others as well. That is why I said, if you're asking doubts, it would be helpful for others also if you're trying to ask in the group itself. And yeah, Nihar, I hope your question is cleared. Yes, anyone else? Any doubts? Okay, I hope there are no other doubts. If there are any doubts, you can once again ping on the group or ask personally. Don't hesitate. So thank you everyone for attending. Okay. Sarthak has posted something from ChatGPT. DALI can also perform style transfer, which involves modifying the style of an existing image to match the style of a different image or artwork. This is done by using DALI to generate new image in the style of desired network, and then blending it with the original image to create a hybrid image that has the content of the original image and style of the desired network. Okay, that's good. So I apologize if I give the wrong answer. I am not that knowledgeable in depth in DALI. So once again, you can always refer to ChatGPT or read the research papers. That will give you more better insights and clearer answers. Yes, Sarthak. So assuming there are no other doubts anyone has or queries anyone has, I would like to end the session right now. If everyone is okay with that. Okay. Thank you, Vedant. Thank you so much. Thank you everyone for attending. I hope it was useful for all of you. We'll have offline sessions as well, since we had to complete this study jam fast. We took it online. Else the further sessions will be offline, and we'll cover every single algorithm, every single concept, CNNs, every single thing. So don't worry about that. So once again, thank you all for joining, and you all can leave. Thank you guys. Thank you so much.